Hi everyone, welcome back to Dr. Solve Sir classes, and we were doing some classic PYQs from NEET paper. NEET questions are being solved, and we are solving back-to-back questions to series or marathon. You can say NEET marathon is going on, and we are focusing on our budding doctors and aspirants of NEET who want to clear this exam and want to serve in hospitals as doctors for our nation, for our people, and for a better deed. Okay, now let's focus on the question. Cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in, see, it has been asked in the September 2020 again, ducts of salivary glands, proximal convoluted tubule of nephron, eustachian tube, or lining of intestine. Tell me. First you would try. I'm giving you some time. Done? Okay, let's learn over here. So cuboidal epithelium with brush border, what does it mean? Microvilli. Okay, what does it mean? It basically means cells. Okay, cells which is cuboidal. Then comes a surface which is microvilli or brush border. And then comes a function which is absorption. So microvilli increase surface area of absorption. Basically it is that. Okay, microvilli increase surface area. Okay, and where we find this, where do we find this? Its classic location is proximal convoluted tubule, that is PCT of nephron. Okay, we find this in proximal convoluted tubule, this one. Okay, so basically we find over here, because why do we find this? We find this in proximal. And because why do we find it over here? Because PCT reabsorbs how much? Glucose. Number 2 is amino acids. Number 3 loans, and number 4 and number 4 water. Okay, and the maximum surface area is microvilli presence. So over here we have got ducts of salivary glands जो जिसको हम लोग लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल और कॉलमनर भी कह सकते हैं, एंड नो प्रोमिनेंट ब्रश बॉर्डर. ओके, डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या होता है? सिंपल क्यूबॉइडल और कॉलमनर, एंड नो प्रोमिनेंट ब्रश बॉर्डर. ओके, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स तो हम लोग यहाँ पे पढ़ाई है, फीचर्स हमने दे दिया. सिंपल क्यूबल एपिथेलियम है, डेंस ब्रश बॉर्डर है जो कि माइक्रोविली कहता है, और हाई एब्जॉर्प्शन है, तो ये सही है. सी अगेन गलत है. क्यों गलत है? क्यों? इट्स लाइंड बाय सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम.
एपिथेलियम, ओके। एंड इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है मूवमेंट ऑफ म्यूकस, नॉट एब्जॉर्प्शन। एंड लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम विद माइक्रोविली है, माइक्रोविली प्रेजेंट है, बट सेल्स आर कॉलमनर नॉट क्यूबोडल, ओके। सो यहाँ पे क्यूबोडल भी कीवर्ड है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्या है कि यहाँ पे माइक्रोविली प्रेजेंट तो है, माइक्रोविली प्रेजेंट, ठीक है, बट सेल्स क्या है? सेल्स कॉलमनर है, सेल्स है कॉलमनर, ठीक है। तो माइक्रोविली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन भी चाहिए, क्यूबोडल सेल्स भी चाहिए, तो ये कहाँ पे है? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ओके। एक एक चार्ट यहाँ पे थोड़ा सा लिख के रखो, लोकेशन, ओके। और यहाँ पे लिखो एपिथेलियम, ये है पीसीटी, ये है क्यूबॉइडल और माइक्रोविली, ओके। यहाँ पे है इंटेस्टाइन, ये यहाँ पे है कॉलमनर माइक्रोविली, इसके बाद है ट्रेचिया, यहाँ पे है सिलिएटेड कॉलमनर, ओके। ठीक है, चलो ये हो गया है हमारा सवाल समाप्त, और मतलब जवाब भी समाप्त, और हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, ठीक है, पूरे तरीके से। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वी आर एंडिंग दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। हैव अ लवली डे, टेक केयर, बाय बाय।